My dear students, we are discussing biological sciences. I have already delivered lectures and notes on physical sciences. So today we are starting biological sciences. Biological sciences are those sciences which are related to life. We have chemistry, physics. So chemistry and physics, geology, geography and other sciences are related to inorganic and non-living world. We have knowledge on the top, then we have two branches of knowledge, science and art. Art is about the aesthetical representation of life, the representation of beauty. Aesthetical means related to beauty. So in art we study beauty, we represent beauty. And then there are two types of arts, fine arts and utilitarian arts. Fine art is only for aesthetical satisfaction, while utilitarian arts has some utility like earning money. A carpenter is doing utilitarian arts while a singer or poet is doing fine art. On the other hand, we have science. So we have many types of sciences. For example, we have exact sciences, we have mathematical sciences, we have natural sciences, we have biological sciences. So biological sciences are basically related to life. Life is a very unique phenomenon in this universe. In this universe we have a lot of planets, a lot of stars, galaxies, and we have the earth, the planet earth also. One of the most substantial question of human being, that is to find life anywhere else other than earth. On earth we have life, we have human beings, we have animals, we have plants, we have microorganisms, we have macroorganisms, and we also have mountains, and we have rocks and stones and water, oceans and rivers and sea. So this world is beautiful because here is life, and there is also things which are not living. There is a principle, very interesting principle, that is called Gaia principle, Gaia. Gaia principle means that there can be communication between living and non-living things, organic and non-organic things. For example, I can talk to stones, I can talk to trees. My grandfather, when he used to go to fields, so he would be talking to plants, and I would be asking him that why you are talking to plants, they do not understand you. So he would say that no, they understand me and I understand them. And he would be asking them, how are you doing today, do you need anything? And he told me that when I talk to my plants, my crops, so they grow and they glow and they become happy. So this is a new area. In Japan, they have done some research that plants, they do have nervous system. For example, human beings, we have central nervous system and we have peripheral nervous system. We have our brain and we have our nerves and we have our spinal cord. Animals also have nervous system, but whether plants have nervous system or not. So this is another interesting field in research that they are conducting research on it. So in biological sciences we are interested in life. This is why it is also called life sciences, because here life is the main target, whether it is human life, animal life or plant life or microorganisms life, but we are discussing the phenomenon of life. Now what is life? According to philosophy, life is space-time. Life is the interval between death and birth. In birth, before birth we have no time and space, and after death we do not have time and space. But according to science, life has some symptoms. Life has some signs, not symptoms but signs. For example, movement, reproduction, growth,
respiration, excretion. So these are digestion. These are some of the important signs that we can differentiate between living and non-living organisms, which is animate and non-inanimate organisms. So one of the structure of life, that is cell. In biology, we study cell as the unit. We start life, studying life from the unit, because the difference between science and philosophy is that science starts from particular and it goes to general, while philosophy starts from general and it comes to particular. Science starts from small unit, discuss small unit, and then build its theories and research and go to the universe, while philosophy starts from the universe and comes to unit. This is called scientific method, and in logic we call it inductive method. Inductive method, that we start from the small unit and then we grow and we go and we understand the bigger aspects of this universe or nature or life. So cell is the physiological and morphological unit of life. Cell is the morphological and physiological unit of life. We have different cell organisms, like we have cell wall in plants, cell membrane in animals, then we have a nucleus, then we have different organelle, different small parts of the cell. For example, mitochondria, centrosome, ribosome, and all these are part of DNA, RNA, chromosomes. So these are parts of the cell. I have given you notes, and you will be reading those notes, and we will continue this discussion. So please make a comment that cell is the physiological and morphological unit of life. Cell is the morphological and physiological unit of life. So Rahman says and Haris Jamali that cell is the morphological and physiological unit of life. You have to know these words: morphology, physiology. These are different branches of biology. In morphology we study structure, and in physiology we study function. The structure, for example, what is the structure of my digestive system? So I have my mouth, tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum. So this is morphology. Physiology is the function, what my stomach is doing. So that is called physiology. So physiology is the function and morphology is the structure. Now, cell is an important element of living life, be it human or plants or animals. Every living organism is composed of cells. Every living organism is composed of cells. Naturally, if they are the structural and functional unit of living, there has to be something peculiar about them. Do you know what it is? What is it about cell structure and functions that they make them so important? So let us find out. I will be giving you the link of this article also, and you can find it if somebody is there. It's a very good website, topper.com, TOPPR.com, and then you write cell structure and functions. Cell structure and functions. So read this one later on, and also read the notes, and you can read a general science book also. You can read metric science or FSC science also, biology book,
So every biology book they have these things. Why virus is not a cellular organism? Virus is a unique organism because there is still confusion whether it is living or it is non-living, whether it is organic or it is inorganic. So we will be discussing viruses later on. So this is class 8 biology, but they have also class 12 biology. So you can study class 12 biology also for this topic. So every organ in our body performs a variety of different functions such as digestion, assimilation, absorption. Similarly in the plant, so there are different organs of plant which perform specialized or specific functions. For instance, the roots of plants help in the absorption of minerals and water. So we have animals and we have plants. For example, in animals we have digestion, we digest food. The next stage is assimilation. Assimilation means that the food is assimilated in the body through circulatory system. The blood carries the energy produced from the food and it goes to brain, it goes to our legs, it goes to our hands and everywhere. So that is called assimilation. And finally it is absorption. So stomach, intestine, large intestine, they do different functions. Similarly in plants also there are different parts and they do different functions. Roots, leaves, branches, flowers, they have their different functions. In our body and in the body of every living organism, every organ is composed of smaller parts known as tissues. A tissue is a group of light cells that perform a specific function. Let's learn more about the cell structure and functions. Okay, so you should make a diagram. Diagram is that we have life, then we have animals, plants, then we have system, then we have organ, then we have tissues, and finally we have cell. This is the diagram. Okay, we have animal kingdom. This we will discuss in the next lecture. Animal kingdom, plant kingdom, then we have system like digestive system, then we have organ like a stomach, then we have tissue, within stomach we have tissues, and then tissues are made of cells. So cell is the smallest unit, though we have subcellular organelle in which we have small further parts as well. Now cell has different parts. One part is cell membrane. One of the most important parts of the cell is the cell membrane. The cell membrane acts as a semi-permeable barrier. It allows only a few molecules across it and fences the majority or organically produced chemicals inside the cell. अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन का मतलब है मामूली सा पट्टी टाइप, बिल्कुल पतला सा, आप उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. तो वो जो पट्टी है वो सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल का मतलब है कि इसमें से कुछ चीजें निकल सकती है, कुछ चीजें जो है वो नहीं निकल सकती. कुछ चीजों को इस सेल से निकालने देती है और कुछ चीजें जो है वो सेल्स के अंदर रह जाती है. The primary components of the cell are cell membrane, nucleus, cytoplasm. सेल में तीन बड़ी पार्ट्स है: cell membrane, nucleus and cytoplasm. The nucleus and cytoplasm are enclosed within the cell membrane. That is also known as the plasma membrane. It works to separate cells from one another and also the cell from surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movements of materials or substances both inward and outward. तो ये सेल मेम्ब्रेन को आपको इसमें वेबसाइट में भी आपको पता चलेगा और नोट्स में भी मैंने आपको दिया है.
Cytoplasm. Another important part of the cell is cytoplasm. It is a jelly-like substance that is present between the nucleus and the cell membrane. तो एक न्यूक्लियस है, आपका दायरा है, दरमियान में मरकजा है, मरकज, ठीक है, उसके ऊपर वो जाली है, सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में जो जेली लाइक चीजें है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. There are a number of other components or organelles of the cell that can be found in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes. ऊपर की पट्टी है सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये बाकी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह. Nucleus is believed to be the most important component of the living cell. It is located in the center of the cell and is usually spherical in shape. You can scan the nucleus and see it clearly by using a microscope. The nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane known as the nuclear membrane. Nucleus का अपनी भी एक पट्टी है, जाली है, जिसको nuclear membrane कहते हैं. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside the nucleus. तो ये जो जाली है, मेम्ब्रेन, इससे भी चीजें इधर उधर जा सकती है. There is a smaller body found in the nucleus. This is called nucleolus. Beside the nucleolus, the nucleus has also several thread-like structures known as the chromosomes. अब न्यूक्लियस के अंदर जो है खतरनाक चीजें मौजूद है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. ये जो लड़का लड़की बनते हैं तो वो XY क्रोमोसोम से बनते हैं. अब हमारे लोगों को ये नहीं पता कि यार जो लड़की पैदा होती है तो वो XX क्रोमोसोम से होती है, और जो लड़का है वो XY क्रोमोसोम से. लेकिन ये जो Y क्रोमोसोम है ये मेल में होता है, ये फीमेल में नहीं होता. तो अगर एक खातून की मुसलसल लड़कियां हो रही हो तो कसूर किसका है? फादर का है, मदर का नहीं है. हमारे गांव में जो है एक खातून 11वीं लड़की में मर गई क्योंकि शौहर कह रहे कि तुम मुझे बेटी नहीं दे रही. तो वो जो है XY क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं. जीन्स के अंदर पे ये DNA और ये कहानी जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये चीजें जो है फिर आपका जो जेनेटिक्स है, आपका जो लेगेसी है, जो इनहेरिटेंस है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन के दरमियान जो सिलसिला चलता है वो जीन्स के थ्रू चलता है. जीन्स किधर होते हैं? वो क्रोमोसोम्स पे होते हैं. जेनेटिक्स में फिर हम जीन्स पढ़ते हैं. जेनेटिक्स जो है ये भी बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है. So the chromosomes carry genes and support in transfer or inheritance of characters from the parents to the offspring. You can only see the chromosomes when the cell divides. अब सेल जो है ये डिवीजन भी करता है. एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मियोसिस. जो रिप्रोडक्शन है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है उसको मियोसिस कहते हैं. और आपका जो फिजिकल ग्रोथ होता है तो वो जो सेल डिवीजन है उसको माइटोसिस कहते हैं. तो माइटोसिस और मियोसिस, ये चीज आपने पहले सुनी होगी, लेकिन इसको बार बार पढ़े ताकि आपको जनरल साइंस एबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो. न्यूक्लियस वर्क्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. Protoplasm is called the living substance of the cell. So overall, nucleus plus cytoplasm, we call it protoplasm. तो इसके बाद आप इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो पढ़ोगे, और मेटाबॉलिज्म जो है वो आएगा. इसमें सारी चीजें जो है ये आपका सेल में होते हैं.
एक चीज आपने पढ़ना है अलहदा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल जो है उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, सेल वॉल होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं, विच सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन उसके बाहर जो है जो एक और एक्सटीरियर वॉल होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द एनिमल सेल ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल नहीं होता, ये डिफरेंस है। इन प्लांट सेल्स देयर आर क्लोरोप्लास्ट विच आर हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। अब आप देखिए कि प्लांट कितनी जबरदस्त चीज है, ये ऑटोनोमस है, सेल्फ सफिशिएंट है। पौधा जो है वो किसी का मुहताज नहीं है, पौधा जो है अपना खाना खुद बनाता है और आपको भी खाना देता है, आप उसको खाते हैं। मुझे खुद प्लांट से बहुत ज्यादा शौक है और हर साल जो है मैं अपनी जमीनों में जो है ना सैकड़ों पौधे लगाता हूं और नेचर में मैं जब भी जाता हूं तो अजीब किस्म की खुशी मुझे महसूस होती है। तो आप भी साइंस को इस तरह पढ़ा करें, इसको मजे लिया करें। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके साथ इसमें क्लोरोफिल होता है, एक सब्सटेंस जिसके थ्रू आपका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में आपका ऑक्सीजन जो है खारिज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन खारिज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंज्यूम हो जाता है और आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो ये जो प्लांट्स के जो लीव्स है जो ग्रीन है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसको बाहर से खाना पड़ता है। लेकिन एनिमल जो है, प्लांट जो है वो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हाउ? बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि एनिमल्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट सेल में एक वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल एक खाली जगह होती है जिसको वैक्यूल कहते हैं। द एनिमल सेल्स आर ब्लॉबी। ऑन द अदर हैंड द सेल्स इन द प्लांट्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल। इट फॉर्म्स अ लेटाइस लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स विद रिजिडनेस। तो ये है कि प्लांट्स का जो सेल है वो ज्यादा प्यारा है, वो ज्यादा खूबसूरत है, उसमें सेल वॉल होता है और एनिमल वॉल जो है वो ब्लॉबी टाइप होता है। तो इस वजह से प्लांट्स बंदे को बड़े अच्छे लगते हैं। अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द नेम गिवन टू सेल्स विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस? Cell without a well-organized nucleus, the cells which lack a definite nuclear membrane is known as prokaryotic cells. यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक सेल जो है ये आपके नोट्स में है कि कुछ सेल्स का जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उनका नहीं होता तो उनको फिर कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसका ज्यादा काम क्रोमोसोम्स है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनका रिप्रोडक्शन इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना ह्यूमंस का है। अब इंसान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इंसान का जाइगोट कैसे बनता है, इंसान का जो गेमेट्स है एग और स्पर्मेटोजोआ जो है वो कैसे मिलते हैं, ठीक है। एग और स्पर्म मिलते हैं, उससे गेमेट बनता है, गेमेट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से फिर जो है बेबी पैदा होता है। 9 महीने प्रेगनेंसी चलती है यूटेरस में, वोम में, मां के अंदर। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, तो इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियस चाहिए, वरना फिर बड़े मसाइल होंगे। ये जो इंसान क्रेजी मेड पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपनी से लोग गलत पैदा होते हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके न्यूक्लियस में, उनके क्रोमोसोम्स में, उनकी जीन्स में गड़बड़ होती है। तो इस वजह से फिर आगे चीजें जो है वो उस तरह नहीं चलती। ये एक और डिस्कशन है जिसको हम नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर के कुदरती तौर पर इंसान बुरा होता है या माहौल से वो बुरा बन जाता है।
कुदरती तौर पर इंसान अच्छा होता है या माहौल उसको अच्छा कर देता है। तो इसको एनवायरमेंटलिज्म और हेरिडिटेरियनिज्म कहते हैं। यहां फिर जेनेटिक्स का रोल आता है कि भाई अगर एक डाकू है, ये इसमें क्रिमिनोलॉजी में बाकायदा एक थियरी है, ये खतरनाक थियरी है, बायोलॉजिकल थियरी, कि एक क्रिमिनल मजबूर है कि वो क्रिमिनल है, कि उसके जीन्स में क्रिमिनलिटी है। अब जीन्स जो है वो कौन सी चीजों को ले जाती है, कौन सी चीजों को नहीं ले जाती, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है। पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं कि भाई साइंस खत्म हो गया, आगे बहुत ज्यादा साइंस है जो लोगों ने रिसर्च करना है। सो प्लीज रीड द नोट्स, रीड सेल, that is our topic. Be ready for the weekly test writing on the cell structure and functions. All the best.